the most professional pilots. The other two aircraft are Wing Commander Munit Dogra and Wing Commander Gaurav Patania. The Apaches, with its advanced fire control radar, night vision system, and arsenal of Hellfire missiles and Hydra rockets, is a formidable force in the battlefield. These Tejas attack helicopters are the face of the modern machines in India's lead into the manufacturing advance of the rotary wing platform. And there you can see Formation Airborne from Air Force Station Hindon, led by Group Captain Praveen Savitri. The Apache attack helicopters flying in victory formation. संतुलन, साहस और शौर्य का परिचय 3 अपाचे हेलीकॉप्टर विक्ट्री फॉर्मेशन में कर्तव्य पथ के ऊपर पहुंचते हुए 137 हेली स्क्वाड्रन से नेतृत्व ग्रुप कैप्टन प्रवीण सारथी कर रहे हैं। अन्य सदस्य हैं विंग कमांडर मुनीत डोगरा और विंग कमांडर गौरव पठानिया। The aircraft equipped with state-of-the-art avionics and sensors, allowing them to operate in a variety of environmental weather conditions. इंडिया गेट के ठीक पास पहुंचते हुए तेज खिली हुई धूप और साफ आसमान, सतलुज फॉर्मेशन, 2 डॉर्नियर और एक AM-32 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट विक्ट्री फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए नजर आएंगे। Formation led by Wing Commander Pinat Ashok Kurkute, along with Flight Lieutenant Anurag Mishra, Wing Commander Amol, along with Flight Lieutenant Sahaj Preet, and Squadron Leader Rahul Kishore, along with Squadron Leader Rohit Anand. Formation comprising 1 A-32, which is airborne from Air Force Station Chandigarh, while the Dorniers taken off today from Palam Air Base. A-32, a strong, rugged airplane with a mighty roar, is the workhorse of the Indian Air Force transport fleet. Satluj formation. The Dorniers belonging to 41 Squadron, also known as the Otters, with the motto Samay Par Sahayata. They have the unique distinction of being the only aircraft in the IAF with the role of air calibration of the IAF airfields. And now, the Rakshak formation debuting on the Kartavya Path today for the maiden formation flypast, Rakshak, the Dornier formation of the Indian Coast Guard. True to their motto, Vayam Rakshamaha, the Indian Coast Guard have rescued over 12,000 lives from the unforgiving ocean. The Indian Coast Guard joined at sea. And now, the next formation, Arjun formation. Formation comprising 1 C-130J Super Hercules aircraft and 2 C-295 aircraft, the latest tactical transport aircraft of the Indian Air Force. 295 विमान एशॉन में C-130J एयरक्राफ्ट के साथ, और इस फॉर्मेशन का नाम अर्जुन फॉर्मेशन मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जुन सिंह के नाम पर रखा गया है। नेतृत्व ग्रुप कैप्टन अंकित राज सिंह कर रहे हैं। The Sukhoi 30 air dominance fighter aircraft of the Indian Air Force. The PHI is a long-range maritime reconnaissance and anti-submarine warfare aircraft equipped with the state-of-the-art sensors and weaponry, including indigenous equipment, making it the most potent maritime platform. The aircraft undertakes wide range of missions. The formation today led by Commander Rajit Kaur, flying the PHI, and the Sukhoi 30 flown by Group Captain Manoj Yadav and Wing Commander Parvinder Singh Chahal. PHI airborne today from Air Force Station Jaisalmer, while the Sukhois have got airborne from Air Force Station Jodhpur. This formation is flying at a speed of 555 kilometers per hour. Formation led by Commander Rajit. शौर्य और साहस का परिचय अब बारी है Beam formation. Now gracing the skies is the awe-inspiring beam formation. Leading this majestic display is the C-17 Globemaster, a true embodiment of power, endurance and reliability in the air. बीम फॉर्मेशन में एक C-17 और 2 Su-30 विमान एशॉन स्ट्रीमिंग फ्यूल में विक्ट्री फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहे हैं। ग्रुप कैप्टन समीर तेजावर के नेतृत्व में साथ में है ग्रुप कैप्टन ध्रुव कुमार और विंग कमांडर Transport aircraft C-17 taken off today from Air Force Station Hindon, while the Sukhois got airborne from Jodhpur. Formation flying
of 555 kilometers, which Haman mentioned in dispatches. Sukhoi is flown by Group Captain Dhruv Kumar by आसमान में इन वायु गर्जन करने वाले विमानों को ढूंढ रही हैं और एक के बाद एक हैरत अंगेज कारनामे करते हुए फॉर्मेशन आगे बढ़ते हुए। And now time for faster moves with pure fighter formations in relief, Jaguars. Jaguar, a versatile twin-engine strike aircraft known for its robust design and adaptability, capable of performing in challenging environment and thus a valuable asset for close air support, precision strike and reconnaissance missions. And there you can see 5 Jaguars in arrow formation led by Group Captain Akash Chechi. The other members of the formation, Wing Commander Ujjwal K. Mishra, Aditya Jamdatni. स्क्वाड्रन का मोटो शक्ति विजयते, आदर्श भाग्य। फॉर्मेशन का नाम अमृतकाल, भारत का विजन 2047 and flying at a speed of 750 kilometers per hour. Today led by Group Captain Akash Chechi. Undoubtedly, one could say that even the winds around the Kartavya path have stopped to stare at these Rafales. 6 Rafale fighter aircraft flying formation led by Squadron Leader Amol Garg, Squadron Leader Mihir Vivek Chaudhary, Squadron Leader Sarthak Kumar, Squadron Leader Mohit Tyagi, Squadron Leader Arun Athare, and Squadron Leader Sivangi Singh, all from 17 squadron. त्रिशूल फॉर्मेशन में 3 Su-30 विमान वेग के फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए नजर आएंगे। 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से त्रिशूल भगवान शिव का अस्त्र है और बुराई के अंत का, दुश्मन के संहार का परिचय है। Formation led today by Group Captain Manish Arora, Shaurya Chakra. Other members in the formation are Wing Commander Kunal Kalra and Wing Commander Abhimanyu Singh, all from 15 Squadron. And there you can see the Trishul formation comprising 3 Sukhoi 30 MKI air dominance fighter aircraft flying at a speed of 900 kilometers per hour. त्रिशूल फॉर्मेशन बनाते Having pulled up, watch the leader going रखिए and in command of Group Captain Abhishek Tripathi along with Flight Lieutenant. So now here comes the single Rafale flying at 900 kilometers per hour. All set to touch the sky with glory as he will execute the victory roll over Kartavya. With parades and form for the national anthem, and then they will escort the Supreme Commander of the Armed Forces, the President of India, Srimati. गणतंत्र दिवस समारोह का आकाश में रंग बिरंगे गुब्बारे और संविधान के लोगों वाले बैनर्स ऊंचाई को छूते हुए संविधान के 75 वर्ष पूरे होने की भावना जीवंत और साकार होती हुई। Hundreds of balloons in the colors of the national flag rising in the sky, a beautiful blue winter sky welcoming them in its warm embrace. This symbol warm reinforcement of the camaraderie and coming together. दिनेश कुमार त्रिपाठी और वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह के द्वारा प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड लाइंड अप। वायु गर्जन सुना हमने, वायु विचरण देखा, रोमांच की पराकाष्ठा तक पहुंचा ये समारोह। एयर डेविल्स के हैरत अंगेज कारनामे देखे, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वैभव अपनी पराकाष्ठा पर, अपने वैभव की ऊंचाइयों That of the nation and collective hopes and dreams. Post the culmination of the parade here, we now see the departure of the Vice President of India from the center base. पिछले 10 सालों से उन्नति को उत्थान Look at the miles we have covered, and of course, deep plan from a closer vantage point. के उपरांत माननीय प्रधानमंत्री महोदय जरूर उनके करीब आएंगे और आप देख सकते हैं उपस्थित जनसमूह के चेहरे पर मुस्कुराहट। उन्हें आशा है कि देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पर्व के पावन अवसर पर और माननीय लहरा रहे हैं बहुत ही शानदार खुशगवार मौसम,
राष्ट्रीय पर्व को एक नई आभा, नई गरिमा, नया सौंदर्य प्रदान करता हुआ। Well, definitely, on days like today, national celebration takes on new meaning, patriotism takes on a new flavor, and of course, celebrations come out in their entirety. Comedy of nations, and though we do understand that we are work in progress, we have grown and ये संतोष की घड़ी है। बहुत सारे एनक्लोजर्स के पास जाकर के लोगों से मिलने के बाद उनसे अभिवादन स्वीकार करने के पश्चात अब अपने वाहन पर पहुंचे हैं और प्रस्थान कर रहे हैं कर्तव्य पथ से। 26 जनवरी 1950 से शुरू होकर 2025